हेलो, वेलकम टू तर्कशास्त्र। आई एम योर फ्रेंड आदित्य एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीमैट 2024 एग्जाम के बारे में एंड द लास्ट क्रैश कोर्स बैच व्हिच वी आर स्टार्टिंग फॉर दिस सीमैट एग्जाम। उसके अपडेट में एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको 2 मिनट में दे दूंगा, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। Agenda of today's session, today's video is trying to understand the tentative dates and tentative schedule for CMAT exam. After that, we will be analyzing 2023 CMAT exam paper. According to that, we will try to plan preparation for CMAT 24 in the remaining number of days. I'll give you the list of complete topics for CMAT exam based on previous year papers analysis. And at the end of the video, I'll be giving you total details about the last crash course. So if we discuss about tentative schedule, the official notification is not yet out on the AICTE CMAT website. It should be out soon because previously CMAT exam used to be conducted before Maharashtra ka MBA CET exam. Now that they have not yet released the dates, and it is said that Maharashtra MBA CET will be conducted on 9th and 10th of March. Will be conducted on 9th and 10th of March. So CMAT exam used to be conducted before MBA CET exam, barring few exceptions. So what we can expect is the exam should be conducted in the month of March or April. CMAT exam. Once the official notification is out, they will release the forms for around 4 to 6 weeks. After that, they'll release the admit cards, and around 7 to 14 days after releasing of admit card, the exam is usually conducted. So what we can expect is the probable dates of CMAT exam can be, अगर उन्होंने CET exam के पहले conduct किया तो it can be around 28th of February, 28th, 29th of February. Or if they conduct after CET exam, then it can be anywhere between March and April. So what we can be 100% assured about is CMAT exam will not be conducted before 28th or for 2024, 29th of February. इतना तो पक्का है, right? So if we count the number of remaining days for this exam, there are minimum 75 days left for CMAT exam. Correct? So how you should plan your preparation in these 75 days is what we are going to analyze in this next slide. बट उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि सीमैट 2023 में या फिर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए. So let's go back to our website www.tarkashastra.co.in. If you go scroll down, आपको यहाँ पे नीचे सीमैट 2024 का एक टैब दिखेगा इन MBA एंट्रेंस एग्जाम्स सेक्शन. यहाँ पे आप थोड़ा नीचे जाओगे तो सीमैट एग्जाम 2023 में 20 क्वेश्चंस ईच वर आस्क्ड ऑन 5 डिफरेंट सेक्शंस. लेकिन इसमें से कौन से टॉपिक के ऊपर कितने क्वेश्चंस पूछे थे ये कहां पे मिलेगा आपको डेटा. दिस इज हियर. द एग्जाम वाज कंडक्टेड इन 2 स्लॉट्स. क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन इज द वन सेक्शन. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड आर 20. तो डेटा इंटरप्रिटेशन का एक टेबल आया था जिसमें 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे. अलजेब्रा 2 क्वेश्चंस एंड 1 क्वेश्चन. Arithmetic, time, speed, distance, ratio, proportion, profit, loss, simple interest, compound interest, averages, partnership, 6 questions and 8 questions. So major chunk is asked on arithmetic in quant section. Geometry, 1 or 2 questions. Numbers, 5 to 4 questions. And probability, 1 to 4 questions. So I can assure you that modern maths में permutation, combination and probability is the very important topic. Numbers is a very important topic for CMAT exam. Sometimes they will ask you questions on geometry. Sometimes they will ask you questions on algebra. Okay. So you need to be well prepared with all these topics. Arithmetic is the backbone of CMAT quant section and data interpretation. Usually CMAT exam बहुत easy हो जाता है because of the ample amount of time. For CMAT exam, you have 3 hours available and no sectional time limit. Right? There is no sectional time limit and exam is of 3 hours.
तो 3 आवर्स में आप कोई भी सेक्शन पे कितना भी टाइम स्पेंड कर सकते हो, जिसमें से आपको पता है कि जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चंस के लिए मैक्सिमम 15 मिनट लगते हैं। और चलो आपका रीडिंग स्पीड थोड़ा स्लो भी है तो 20-25 मिनट पकड़। यू इधर नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन और यू डोंट नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे तो कोई कैलकुलेशंस करना है नहीं। सेम गोज विद इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे भी कोई न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस नहीं आते, प्योर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। So you either know the answer of that question or you don't know the answer of that question. तो यहाँ पे 30 and 30 minutes भी हमने पकड़ लिया मैक्सिमम, तो you spend 60 minutes on these 40 questions and you are still left with 120 minutes for these 60 questions, which is enough time, क्योंकि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में भी आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाता है। 20 क्वेश्चंस के लिए आपको लगेगा मैक्सिमम 30 मिनट, बिकॉज vocab based questions में you either know the answer or don't know the answer. Even if you come back to that question, mark that question for review and come back to the question after 15 minutes, after 30 minutes or 45 minutes, जो वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता था वो वर्ड का मीनिंग आपको बाद में भी नहीं स्ट्राइक होने वाला, और अगर पता है तो भी कौन सा इतना ज्यादा टाइम जाने वाला है, राइट। सो major scope of improving the score in this exam is in these two sections, logical reasoning and QADI, बिकॉज सबसे ज्यादा टाइम लगेगा आपको लॉजिकल रीजनिंग के पजल्स सॉल्व करने में एंड क्वांट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के कैलकुलेशंस, फॉर व्हिच यू हैव इनफ टाइम। दैट्स व्हाई आई विल हेवीली रिकमेंड यू टू प्रिपेयर ऑल द टॉपिक्स ऑफ CMAT एग्जाम सिंसियर। दिस इज द सिलेबस ऑफ, दिस इज द एनालिसिस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन बेस्ड ऑन CMAT 23 स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। यहाँ पे आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ द चंक वाज आस्क्ड इन ऑन वर्बल रीजनिंग, सिलॉग्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट, जिसको हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, assertion, reason, analogies, odd one out, etc. Then let's go back to the last section, language comprehension. इसमें grammar, fill in the blanks, identify the correct statement. So vocab based questions भी 7 से 8 questions आते हैं, grammar based questions भी 7 से 8 questions, करेक्ट। रही बात जनरल अवेयरनेस की, सो जनरल अवेयरनेस आपको करंट एंड स्टैटिक, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक पे ही पूछा जाएगा, जिसका हम लोग वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे। यू जस्ट हैव टू फॉलो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड टू द लेटेस्ट अपडेट्स, फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। Okay, this is the detailed analysis of CMAT 2023 exams. Based on this analysis, if we try to prepare the preparation plan for CMAT 2024, it can be something, it goes on something like this. If I say 75 days are left for the CMAT exam, you have to take the 75 hard challenge. करेक्ट। सोशल मीडिया वाले बनवारी लाल जैसा जी जैसा नहीं, आपको प्रिपरेशन वाला 75 हार्ड चैलेंज देना है। इसमें से यू विल नीड 25 days, strictly 25 days for quant and data interpretation, topics learning plus questions practice. You will need maximum 10 days for your VARC preparation। क्योंकि क्यों ये मैं बताता हूँ। इसमें आप क्या करोगे, सिर्फ ग्रामर प्लस थोड़ा सा वोकैब, जो टेक्निकलिटीज होती है वोकैब की, वो टेक्निकल मेथड्स यूज करके करोगे तो इडियम्स एंड फ्रेजेस बेस्ड जो वोकैब आता है, सिनोनिम एंटोनिम बेस्ड जो वोकैब आता है, वो आपका आराम से हो जाए। एंड अराउंड 15 days फॉर योर लॉजिकल रीजनिंग, चलो 20 days दे दो for your logical reasoning, which is more than enough. Now, if you count, this comes out to be 45 and 10, 55 days. What about remaining 20 days? You have to try and take minimum 20 mock tests for CMAT exam. क्यों? इसके पीछे का रिजल्ट, 20 mocks will give you 20 extra questions of GK, which is 400 GK questions asked in exam, प्लस 400 इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्वेश्चंस आंसर। ये हो गया आपका सिलेबस जीके एंड आई। उसके अलावा आपको डेली डेली VARC के लिए आरसीज पढ़ने,
डेली आरसीज 2 से 3 आरसीज कंसिस्टेंटली सॉल्व करते जाना। उसके साथ साथ डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है। एंड क्यों? क्योंकि इसमें ही आपको करंट अफेयर्स एंड समवॉट स्टैटिक अफेयर्स इज आल्सो कवर्ड। क्योंकि सीमैट में जो स्टैटिक अफेयर्स स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो समवॉट रिलेटेड टू करंट अफेयर्स ही होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ दे इफ यू आर अवेयर अबाउट द करंट इजराइल पैलेस्टीन वॉर और इजराइल गाजा स्ट्रिप वॉर, why that war is originated? That war originated from the city of Jerusalem, which is the Mecca, which is the holy city for three religions, right? Jews, Christianity, and Islam. So the static question will be asked related to this particular city. Correct. So you have to be very, very aware while you read a newspaper to collect the information about the article which you are reading. But it is not practically possible to read all the articles and also simultaneously collect all the information in this given amount of time. So उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपके लिए YouTube वीडियोस लेके आएंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, जिसमें आपका कंप्लीट जीके हम लोग कवर करने की कोशिश करें। रही बात इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की, इसके नोट्स के लिए यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस ऑन द कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So this should be your ideal planning for CMAT exam. इसको अगर थोड़ा ब्रेक डाउन करना चाहते हो आप, तो जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई गिव यू डे वाइज स्ट्रेटेजी फॉर CMAT एग्जाम प्रिपरेशन। डे 1 में कौन सा टॉपिक, क्योंकि क्यूए का हर एक टॉपिक इज लिंक्ड विद सम और द अदर टॉपिक, और देयर इज अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ पिकिंग अप और प्रिपेयरिंग क्यूए टॉपिक्स। टू नो मोर अबाउट डिटेल्स, just write down in the comment section about your requirements so that I can work on those requirements. Then, if we talk about the complete syllabus, we can again go back. देखो, complete syllabus से better मैं हमेशा recommend करूंगा कि आपने previous year paper में जो questions आए हैं पहले वो correct. These are the topics of LR. These are the topics of QA and DR. VRC का तो मैंने बता दिया कि ग्रामर पूरा पढ़ना है, vocab, synonyms, antonyms and idioms and phrases पढ़ने हैं, and RCP. अगर आपको डिटेल लिस्ट ऑफ टॉपिक चाहिए तो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ताकि आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स पता चलेगी एंड देन वी कैन वर्क इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट? सो नाउ discussing about the last batch which is starting for CMAT 2024. The last batch for CMAT 24 is starting from 26th of December 2023, which is the day just after Christmas, next Tuesday. यहाँ पे हम लोग लाइव ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट करेंगे मंडे टू सैटरडे 10 PM टू 11:30 PM। इसका बेनिफिट क्या होगा? इवन इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल और आपके दिन में स्लॉट्स नहीं बनते हैं बिकॉज ऑफ कॉलेज एंड ट्यूशन एंड अदर कमिटमेंट्स, तो यूजुअली रात को 10 बजे सब लोग फ्री होते हैं, अनलेस एंड अनटिल यू आर वाचिंग प्रो कबड्डी लीग और यू आर द फैन ऑफ नेटफ्लिक्स एंड चिल। तो लाइव सेशन आप सब लोगों के लिए रहेगा। इसमें बेनिफिट ये रहेगा कि लाइव सेशंस के अलावा आपको 100+ रिकॉर्डेड वीडियोस भी हम लोग देंगे जो सीमैट फोकस्ड टॉपिक्स के ऊपर बनाए। You will be getting e-books. If you want to purchase hard copy books, there is an option available. But जो कोर्स फीस है ये कोर्स का, उसमें आपको ई बुक्स मिलेगी which has more than enough content for QA, LR, data interpretation, VRC, plus GK and innovation architecture. More than enough content is available. You'll also get sectional test and full length mock test for CMAT exam. Okay, सेक्शनल टेस्ट में आपको पांचों सेक्शंस की डिफरेंट सेक्शनल टेस्ट मिलेगी और बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल ऑनलाइन पोर्टल पे, सब कंटेंट अवेलेबल है which is more than enough for your 75 days preparation. Correct? Then complete assistance for cap rounds till your admission. जब सीमैट के बेसिस पे आपके कैप राउंड स्टार्ट हो गए या फिर आप कोई कॉलेजेस के लिए अप्लाई करोगे तो जीडी एंड पर्सनल इंटरव्यूज आपको कॉल्स आएगा, तो वी विल आल्सो हेल्प यू prepare for these particular rounds in the same fees. Please listen to me carefully.
And the best surprise for you all is the best college to CMAT JBIMS and SIMSRI, and यही कॉलेज के alumni एंड जिन्होंने सीमैट में 99.9 99.8 परसेंटाइल से ऊपर मल्टीपल टाइम स्कोर किया हुआ है, वही फैकल्टीज यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं. करेक्ट. एंड you'll be surprised to know the fees of this course. It is only 7,500. तो 7,500 में आपको लाइव ऑनलाइन सेशंस भी मिल रहे हैं मंडे टू सैटरडे. एवरी संडे के लिए मॉक टेस्ट भी मिल रही है. पांचों सेक्शंस के लिए इनफ सेक्शनल टेस्ट भी मिल रहे हैं. इनफ कंटेंट इन ई बुक्स, रिकॉर्डेड वीडियोस आप कितने भी डिवाइसेस पे कितने भी बार देख सकते हो. ठीक है. देयर इज नो कैपिंग ऑन द नंबर ऑफ व्यूज. अगर आपको हार्ड कॉपी बुक्स चाहिए तो हम लोग आपके एड्रेस पे कुरियर करवा देंगे. फॉर दैट यू हैव टू पे 2000 एक्स्ट्रा. So if you want to know any more details about this batch, do not forget to reach out to us on the contact number given in the description box. Till then, all the best for your CMAT preparation. Thank you very much.